नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। जदि आपण आम चैनल को प्रथम आसन दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो आसला ड्राफ्ट रूल सरकार राज्य सरकार गोटे ड्राफ्ट रूल कर जोटा कि आगामी दिन में गैजेट नोटिफिकेशन प्रकाश पाइब। जो राज्य कर्मचारी का जो GPF अच्छी से GPF रूल जो गोटे नुआ ड्राफ्ट रूल गोटे कराई से विषय में आम संपूर्ण खबरटी विषय जाना। तो दयाकोरी वीडियो को शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबर विषय सठिक सूचना पाइपर। तो ये आप देखुए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ गोटे नोटिफिकेशन आसी जोटा कि 20 सेप्टेम्बर 2024 20 तारीख से आसला। द फॉलोइंग ड्राफ्ट ऑफ सर्टन रूल टू फर्दर आमेन द ओडिशा एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉई जो मैंने अच्छा से जो जनरल प्रोविडेंट फंड रूल 1983 जो अनुसार से द गवर्नमेंट पर्पज टू मेक इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड सबसेक्शन जो सरकार को जो क्षमता अधिकार रे इज हियर बाय पब्लिश एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन द सेड एक्ट फॉर इनफॉरमेशन ऑल पर्सन। ताले जो एम्प्लॉय मैंने अच्छा से इनफॉरमेशन दिखाई लाइक टू बी अफेक्टेड देयर बाय नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द सेड ड्राफ्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑन और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 30 डेज। ताले 30 दिन पर समय दिखाई 30 दिन पर आर पीरियड एक्सपायर हम एवं द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द दिस नोटिफिकेशन इन द ओडिशा गैजेट। ताले जो ड्राफ्ट रूल प्रकाश पाइला आर 30 दिन पर एटा गैजेट रे प्रकाश पाइब बोली कहुई। एनी सजेशन ऑब्जेक्शन व्हिच मे बी रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी। तो जार किसी सजेशन कि ऑब्जेक्शन अच्छी सेक्रेटरी पाखक पठाइबा कहुई। गवर्नमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल मास एजुकेशन फ्रॉम एनी पर्सन with the respect of said draft before expiry of the period so specified above will be considered by the state government। जोटा कि ऑब्जेक्शन एवं सजेशन किसी दबार अच्छी आपन को दे पारे एवं जोटा कि राज्य सरकार से परवर्ती पर्यायर कनसीडर करें। तो ड्राफ्ट रे कौन अच्छी दिस रूल मे बी कॉल्ड ओडिशा एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉई जनरल प्रोविडेंट फंड अमेंडमेंट जोटा रूल 2024। तो सही अनुसार देखिए दे शाल बी कम इन टू फोर्स ऑन द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट ऑफ ओडिशा। तो यह गैजेट प्रकाश पाइबा दिन ठारू एटा आईन में परिणत हम। इन ओडिशा एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एम्प्लॉई जो मैंने अच्छा कर्मचारी मैंने राज्य कर्मचारी जनरल प्रोविडेंट फंड रूल 1983 हियर इन आफ्टर रेफर टू एज अ सेड रूल इन द क्लॉज सब रूल 1 ऑफ रूल 2। तो ये लिखाई फॉर सब रूल 1 excluding the provision thereto the following subclause shall be substituted, namely in case of a male subscriber जदि जड़े मेल सब्सक्राइबर बा पुरुष कर्मचारी अच्छा द वाइफ और वाइफ्स पेरेंट चिल्ड्रेन माइनर ब्रदर अनमैरिड सिस्टर डिजीज सन विडो चिल्ड्रेन वेयर नो पेरेंट ऑफ द सब्सक्राइबर इज अलाइव ए पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट। For subclause 2, excluding the provision thereto, the following subclause shall be substituted, namely, in case of female subscriber, जदि जड़े महिला कर्मचारी the husband, parent, children, minor brother, unmarried sister, deceased son, widow, and children where no parent of the subscriber is alive, a parental grandparent. In the same rule, जोटा कि 7 अच्छी आफ्टर द सेकेंड प्रोविजन सब रूल 1 of the following provision shall be inserted, namely the provident fund also that the sum of monthly subscription during a financial year shall not exceed the limit as specified under rule 80। तो जो रूल अच्छी से कौन देखिए इट मे बी एनी सम नॉट लेस देन 6% ऑफ द एमोलमेंट नॉट मोर देन टोटल एमोलमेंट एडमिशनल टू द सब्सक्राइबर। ताले ये कहुई जोटा कि आपन जी दरमा पाथे तार 6% आमर GPF रे डिपोजिट होगापाई ता सहित प्रोविडेंट फंड दैट प्रोवाइडेड दैट द सम ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन इन ए फाइनेंशियल ईयर shall not be exceed the threshold limit refer to the subclause 1 of the clause C of the explanation given below। ताल से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ जो नोटिफिकेशन प्रकाश पाई
तो सही रूल अनुसार कौन अच्छी देखिए प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द सम ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर टुगेदर विथ एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन and the interest thereon recovered in that financial year shall in no case exceed the limit as specified under rule 80 under the following condition ताले कौन condition अच्छी देखिए in case of those subscriber those GPF subscription during a financial year has already exceed the threshold limit 5 lakh ताले जो GPF subscriber जार की सब्सक्रिप्शन जोटा गोटे फाइनेंशियल ईयर रे जोटा 5 लाख रु अधिक हम ना बोली कहुई नो फर्दर डिडक्शन जीपीएफ सब्सक्रिप्शन मे बी मेड फॉर देयर सैलरी इन दैट ईयर जदि 5 लाख रु कम थी 5 लाख होता सैलरी रु आउ सब्सक्रिप्शन कटा ना डिडक्शन करा इन दोज केस द प्रोविजन रिगार्डिंग मिनिमम मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ 6% ऑफ द एनुअल शैल बी डीम टू हैव बीन रिलैक्स तो से अनुसार आउ इन केस ऑफ दो सब्सक्राइबर whose GPF subscription during a financial year has not reached or the exceed the threshold limit 5 lakh जोटा कि गोटे फाइनेंशियल ईयर रे GPF सब्सक्रिप्शन टा 5 लाख हेई नथिबो जार फर्दर डिडक्शन टुवर्ड GPF सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मे बी फेज्ड आउट इन ए सच ए मैनर दैट टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग दैट ईयर डज नॉट एक्सीड 5 lakh rupees in case where the total contribution is like to exceed 5 lakh even with minimum monthly subscription of 6% of the emolument deduction of GPF subscription from the salary may be stopped as soon as the total subscription in the financial year reach 5 lakh ताले एटी कुआई जो GPF रो 5 लाख आपणकर गोटे फाइनेंशियल ईयर रे एटा थ्रेशोल्ड लिमिट कराई एवं मंथली सब्सक्रिप्शन जोटा थ्रेशोल्ड लिमिट होची 6% बोली सरकार को तरफ एटा ड्राफ्ट रूल ले कुआई सेमती प्रोवाइडेड दैट in some residual amount is held of due to certain reason complaint shall be made by the drawing disbursing officer जो DDO मान अछंती कि my head of office within 3 months from the date of retirement and interest shall be allowed up to maximum 6 months from the date of retirement in addition to any amount to be paid under rule 14 15 16 the interest thereupon to the end of monthly proceeding that in which the payment made or up to end of the 6 months after the month in which such amount became payable whichever this period be less shall be payable to the person to whom such amount to be paid provided that where the account officer has intimated to that person a date in which he prepared to make payment in cash has posted a check in a payment to the person interest shall be payable only up to the end of the month preceding to date so intimated to the date of posting of check as case may be as no interest is admissible on the accumulation in fund beyond a period of 6 months from the date of same became payable the account officer the drawing disbursing officer the treasury officers are ensured final payment within that period ता सहित आउ कोन कहै हम देखिबा while on leave जेतले जण कर्मचारी लीव रे थिबे has been permitted to retire or delay declared by a competent authority to be unfit for further service जेतले unfit हेबे further service the amount standing to its credit in the fund shall be upon intimation to the withdrawal process by the head of office behalf of the subscriber became payable to the subscriber तो से अनुसार से सब्सक्राइब मान जो मैंने कर्मचारी मैंने पेमेंटा करा प्रोवाइड द सब्सक्राइबर इफ रिटर्न टू ड्यूटी shall accept where the government decided otherwise repay to the fund for credit to his account the amount paid to him from the fund of pursuance of this rule with the interest therein at the rate of provided in rule 10 in case of partly in cash by installment authorized by recovery from his emolument authorized it may be directed by one of the authority competent to grant an advance under rule 11 तो से अनुसार आम देखा आउ कौन अच्छी रूल तो the head office of the department shall initiate and forward the detail of the subscriber retiring and quitting service to the account general or controlled account at least 3 months before the superannuation ताले टी कहि रिटायरमेंट रो 3 मास पूर्व आमर हेड ऑफिस नले आमर डिपार्टमेंट कोन करिवे अकाउंट जनरल पाखु तांकर डिटेल सब पठा जिवो एवं तांकर जो सब्सक्राइबर अमाउंट अछि तांकर अन्य जो
किछि मिलिबार अछि सब्सक्राइबर अमाउंट रे केते टंका अछि तांकु विड्रॉ करा जिवो एवं तांकु इंटीमेट मध्य करा जिवो ता सहित तांको अकाउंट रे तांकु दिया जिवो प्रोवाइडेड दैट एप्लिकेशन शैल बी सेंट विथिन 3 months फ्रॉम द डेट of death or the voluntary retirement or compulsory retirement or dismissal from service। तो से अनुसार देखिए आज गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर थिला। जदि आपन खबरटी भल लागिला आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे भूलिए। धन्यवाद।